Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be going to study a very interesting chapter that is growing up in just 5 minutes. Let's just begin with this chapter. So, title of our chapter is Growing Up in 5 Minutes, right? So, this Timble, he is the author of the story. Story के author कौन है? Mr. Timble. And the story in this chapter, Carlo, the author is describing the state of his life कि कैसे उसकी life की अपनी state बता रहा है. And it was just 8 o'clock in the evening and a storm was dragging outside. Means शाम के रात के 8 बज रहे हैं और बाहर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा है. Here he tells about an experience when he was alone in home in a situation which is not at all easy to tackle when a child is alone. Means रात के 8 बजे बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है and he is just telling the experience that when he was 8 years old it was very difficult to handle those situations at that time when he was alone at his place. So let's just read with this chapter. So dressed in my Bugs Bunny raincoat, मैंने अपना बग बनी मीन्स थोड़ा सा फूला फूला हुआ बनी उसमें बना हुआ था एक रेनकोट एंड आई मार्च आउट इन अ स्टॉर्म एंड बिकेम अ मैन और मैं बाहर निकला एंड आई जस्ट बिकेम अ मैन. Right, it was the worst thing that could happen to me, to a pamper 10 year old. मतलब 10 साल तक मेरे को इतना पैम्पर किया गया एंड इट वॉज द मोस्ट worst thing जो आज हुई है. It was just 8 o'clock in the evening in this storm which is dragging outside. बाहर हो रहा है. Homework still undone and home all alone except for the maid. काम भी मैंने नहीं किया अपना होमवर्क और मेड जो है घर पे सिर्फ अकेला हूँ अपनी मेड के साथ. Who was working in the kitchen, who was already working in the kitchen. From time to time I would hear the roar of a tricycle engine. बार बार मुझे इंजन जैसी आवाज आ रही है. And rush to the front door of our house in Queen City, that is Philippines. Philippine city में we are just like मैं वहाँ पे rush कर रहा था. This Philippine की capital क्या है? मनीला, right? And hoping to see कि शायद मेरी mom आ रही है, but it was always someone else mom or dad कि वो हमेशा क्या है प्योर के मम्मी पापा हैं. It was not mine, right? So I like to think of myself as a growing up man. मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति समझ रहा हूँ. बट एंजाइटी वॉज ईटिंग अवे माई बोल्डनेस कि मुझे इतनी ज्यादा अंदर से एंजाइटी हो रही है, वो मेरे बोल्डनेस को खा रही है. द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर और तूफान आने लगा. द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट जा चुकी है. ये वेंट ऑफ क्या है? एक फेज है. द क्लॉक स्ट्रक नाइट एंड आई बिगेन टू क्राई. रात के 9 बज चुके हैं एंड आई स्टार्टेड वीप, राइट. देन द फोन रैंग और फिर फोन बजा. आई जस्ट वाइप माई टीयर्स फॉलोड माई सोब्स एंड आंसर्ड. तो मतलब सिसक सिसक के रोना वो सब मैंने हैंडल किया विद पेशेंटली. एंड इट वॉज माई मदर. और वो किसका कॉल आया था? मेरी मॉम का. Hello, Carlos, she began. I'm still, and I was still feeling that anxiety. Where are you? I interrupted, fully aware that my agitation was unbecoming for a unbecoming for a grown up. Me, मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा है कि मैं इतने बच्चे के लिए जो अभी तक ग्रोन अप नहीं हुआ उसके लिए मेरा गुस्सा बढ़ रहा है. आई एम हियर इन ग्लोरी सुपर मार्केट विद योर ब्रदर कि मैं मार्केट में हूँ आपके भाई के साथ. I knew that Glory supermarket was only 5 minutes away from the house. वो हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है. What time will you be at home? I asked. मैंने पूछा कि आप कितने टाइम पे घर वापस आओगे. Unless we get a ride, you should expect us by any time soon. तब तक तुम यही रुको. We are just like कभी भी हम आने वाले हैं. Why don't you take a tricycle home? तुम ट्राईसाइकिल से घर क्यों नहीं चले जाते? Over here, tricycle means रिक्शा. ट्राईसाइकिल ड्राइवर won't accept any पैसेंजर्स हियर कि वो लोग यहाँ पे कोई पैसेंजर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड. वॉक, तो फिर वॉक कर लो. ठीक है, राइट. थ्रू दैट फ्लड आई डोंट थिंक सो, दैट इज व्हाई आई कॉल्ड. वो कह रहे हैं कि इस बारिश में बाहर निकल के आओ. नो, इट वॉन्ट बी पॉसिबल. आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, खुद को मना लिया. Get your raincoat, hail a trailstorm and fetch us, he said. Fetch us there, she said. उसने कहा रेनकोट पहन के ट्राईसाइकिल पे बैठ के आ जाओ और हमें वहां पे मिल जाओ. फेच मीन्स वहां पे कैच अप कर. Soon I could not utter a word, and my mother continued. Again, he was just on the same condition. He was not able to speak a single word. Utter means to speak, right? और मेरी mom, she was just continuing. Like वो बोले जा रही है. Carlo, is it okay with you? Is it fine from your end? Was that okay with me? Was she kidding me? He's saying, yeah, ये मेरे लिए ठीक है. I am just an 8-year-old boy and she's मजाक कर रही है क्या वो? Just raining outside too hard. डार्क हो रहा है and thunder roared every minute. हर मिनट में बाहर
इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही है। नॉट दैट आई वाज़ स्केयर्ड, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्केयर्ड हुई, बट आई एम जस्ट ओनली 10 इयर्स ओल्ड, हू न्यू व्हाट डेंजर अवेटेड आउट मी आउट देयर इन दी नाइट, कि डार्क में कुछ कोई डेंजर हो मेरे साथ, ठीक है। श्योर, नो प्रॉब्लम, आई रिप्लाइड, आई सेड ओके, देयर इज नो इश्यूज, ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यू माइट गेट वेट, कि अम्ब्रेला लेकर आना, शायद तुम गीले हो सकते हो। आई जस्ट पुट माई फोन डाउन, आई कुड नॉट बिलीव that I said yes, and he was not even believing himself that I said yes, because I wanted to call back and to say that I could not do it, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, right? But then I stopped. Do grown men shrink away from the challenges? क्या बड़े लोग जो होते हैं वो challenges से दूर भागते हैं? No. I was a grown man. मैं क्या हूँ? एक grown man हूँ. And right then I resolved to face the extraordinary challenge जो मेरे आगे आ गया है, because I was willing to handle all those challenges. To commute to a department store 5 minutes away from my home. मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, I just put my raincoat, that was yellow bug bunny raincoat, and stepped out of the house, और मैं हाउस से बाहर निकल। The chilly wind hit me in the face. ठंडी हवा मेरे मुंह पे हिट कर रही थी, एंड द रेन पाउंडेड ऑन मी, और रेन मेरे ऊपर आ रही थी। लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग इट स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई, स्काई के ऊपर लाइटनिंग चमक रही थी। थंडर बूम्ड, और थंडर भी हो चुका, राइट। आई वाज टोटली स्कैर्ड, आई हैडंट एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, से पहले मैंने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रैवल नहीं किया है। And I did not knew what to do, and I don't know now what to do. I recall the newspaper articles about kidnappers. मैंने हमेशा वो सुनी है बातें किडनैपर्स की, who disguise means धोखाधड़ी से themselves as a tricycle drivers भी धोखाधड़ी कर लेते हैं। I agreed to walk back to our house when our tricycle pulled over beside me. अगर वो मेरे को कहीं और ले जाएगी, then I'll be deciding कि मैं वापस वहीं चला जाऊँ जहाँ मैं। Now, boy, you need a ride, the driver asked. आपको कहीं चलना है, sir? Now, I hesitated. I was hesitating for a few minutes. The driver wore a transparent raincoat, was 10 sizes too big, जो कि मुझसे 10 गुना बड़ा था, and had a mustache. He was having mooche, and I remember that all those action films where the bad boy spotted a mustache. Means मैंने देखी है जितनी भी फिल्म्स हुई हैं, उसमें पे जितने भी bad boys होते हैं, they are always spotted with a mustache, and making it easier for the audience to distinguish from the good guys, और good guys से क्या कर देते हैं, it's very like make it easier कि वो कैसे differentiate हो पाए, right? I wanted to say no, but I knew that it might get another right if I turn this one way, कि अगर मैंने इसको जाने दिया, then I won't be able to have another ride, because I wanted to go. Are you getting in what in, the driver asked, कि मैं पूछ रहा हूँ। The tricycle engine hummed impatiently, means वो he was just like blowing his horn, right? Yes, to Glory supermarket, I said finally, मेरे को finally मैंने बोल दिया कि मुझे Glory supermarket जाना है। As we pulled away, I became frantic then with worry. I was totally frightened with worry. What if the driver was a kidnapper? अगर driver kidnapper हुआ तो? What if we charge too much? अगर उसने मुझे बहुत ज़्यादा charge किया? What if he decided to drop me off and I could not find my mother on the way back home? कि अगर मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं मिल पाया और वो मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दे फिर? So overwhelmed means बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद I just began to pray. It did not stop me from trembling, and I was just totally shaking, and I was just praying, but it did ease my fears, और ये मेरे fears में I was totally feeling frightened. The minutes flew by, कुछ मिनट हो गए, and हम लोग कहाँ पहुँच गए? Glory supermarket में we reached. Now my mother, who was standing just outside the main entrance, saw me. उन्होंने मुझे देख लिया. She took my brother Paulo, who was 9, and by her left hand, and carried their umbrella with her right hand, and they walked towards me. अपने भाई को मेरे साथ अपने को मेरे भाई को अपनी लेफ्ट साइड रखा, अम्ब्रेला पकड़ा और मेरी साइड आने लगा। ओह, यू आर रियली बिग बॉय नाउ, कि अब तुम बड़े बन चुके हो। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द मदर्स सेड, would have preferred grown man to a big boy. तुम grown बिग बॉय से ग्रोन मैन बन चुके हो, दैट यू आर टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन योरसेल्फ, बट स्टिल आई ग्लो विद प्राइड। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। वी ऑल गॉट इन, हम सब लोग अंदर गए। टुक द सीट ड्राइवर, सब ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ गए, एज ऑल द ग्रोन मैन डू, और जैसे बड़े लोग करते हैं। पोलो टर्न टू मी, और पोलो भी मेरे साथ हो रहा, ब्रदर यू आर रियली ब्रेव टुडे, said that you did a very bravest job. I smiled casually. It was nothing. कि ये कुछ नहीं है. Someday you will do this too. तुम भी ऐसा करोगे. He looked to me as if I was God. कि I have done a very
huge thing. As the tricycle rode through the flooded street of our neighborhood, past the story, the houses and the people, I felt too great कि लोग pass हो रहे हैं. Everybody, my mom and brother, they were talking about me. I had faced my fears. मैंने अपने fears को face कर लिया. And I had a brother who is totally admiring me, and mother who trusted me, जिन्होंने मुझ पे trust किया. The memory of a little adventure कि वो क्या है, एक छोटा सा adventure, and I had everything, and it was, I felt invincible means कि मुझे कोई हरा नहीं सकता. This was a very glorious story where a boy, he just learned to get grown up in just 5 minutes by taking the courage and facing all the challenges because he faced all the experience. You also sometimes behave like a grown man, that you take the responsibility of your parents as well as your siblings. Please do hard work for your parents as well as with your for your siblings, and keep studying hard for your exam, and